My head is feeling lighter because I've had to take off that, the so-called angled Gorkha hat, which I've been wearing for 41 years. I have come back to the peak because this peak cap that I am wearing is to say that we are now neutral. The CDS will remain neutral. He will be neutral to all the three services within his own service, and therefore my head is certainly feeling lighter. We have to bring an end to terrorism, and that can only happen the way the Americans started after 9/11. They said, let's go on a spree on global war on terror. Anybody who's sponsoring terrorism has to be taken to task. You cannot have partners who are partnering with you in the global war on terror and yet sponsoring proxies and terror. Diplomatic isolation. You have to do this. You have to bring about acceptability in the nation that yes, they are sponsors of terrorism. Denial of terrorism, to say that they are not denying it, they are themselves victim of terrorism, cannot continue for on, and I think we have to get the bull by the horns and take them to task. This was a big misadventure undertaken by the Pakistan Army in 1999. They did not appreciate the will and the intent of the Indian political establishment and the Indian Armed Forces, that they will never allow them to succeed, and no matter what heights they capture, the Indian Army will always get back to them and recapture those heights. And this was evident during the Kargil war in 1999. So I would rather him not dare any such attempt in the future. अक्सर देखा गया है कि लोग भारतीय सेना को एक एम्प्लॉयमेंट का जरिया मानते हैं, नौकरी हासिल करने का जरिया। मैं आपको एक चेतावनी देना चाहूँगा कि ये गलतफहमी अपने दिमाग से दूर निकाल दीजिए। भारतीय सेना एक नौकरी का जरिया नहीं है। अगर आपने भारतीय सेना में शामिल होना है तो आपको शारीरिक और मानसिक रूप से हर तरीके से आपको मजबूती दिखानी है। आपका हौसला बुलंद होना चाहिए। आपको कठिन से कठिन समस्याओं का सामना करने के लिए आप में ताकत होनी चाहिए। जहां रास्ता नहीं निकल सकता वहां रास्ता ढूंढने की काबिलियत होनी चाहिए। तभी आप सही भारतीय सेना के जवान कहलाए जाएंगे। ये नौकरी का जरिया नहीं है। क्योंकि अक्सर मेरे पास कई नौजवान आते हैं कि सर मुझे भारतीय सेना में नौकरी चाहिए। मैं उन्हें यही बोलता हूं कि भारतीय सेना नौकरी का साधन नहीं है। नौकरी लेनी है तो रेलवेज में जाइए, पीएनटी में जाइए, और बहुत से जरिए हैं। अपना ओन बिजनेस खोल लीजिए।